Your Highness, very nice to meet you. Thank you very much indeed. Where my father and mother and us lived here. No electricity at that time when I was born. Only these lights, you see. Oh, the lanterns. Lamp things. And no water. And this is also my grandfather. And that's my grandfather. Zimbabwe. Yes. Lovely country. Did you have people just knocking on the door and saying, I've got a problem with my house, Yeah. You know, can you help me? Yes, but they don't knock on the door. The ruler will be sitting here. So what, the ruler would just sit outside waiting? Yes, by that one, and his people will be here. So anybody coming to see the ruler will sit next to him and say... And say that I need to have this done or I need to have that done? So, yeah, and this is my playground, don't worry. Johannes, I just want to ask you, because we're going past the fabulous skyline that is Dubai. I just kind of, was that a vision? Did you have a feeling that when you were a child growing up, that one day, you know, Dubai would look like this, it would be cosmopolitan, it would be all these things? I will tell you, John. You know, I was lucky enough. I traveled with my father to Europe, England, building and, you know, flags. How do they tell you that they're unhappy? They will tell me. They tell me, you know, and... but is there a form... For example, this telephone, from 10 years ago to now, I haven't changed it. And everybody knows. You know, the whole country knows my number. Ordinary people, anybody knows your number and will ring you up. Yeah, I have two numbers. One is private and one for the public. And Reem knows this. Yeah. So do you like Twitter? Yeah. 2.4 million followers, I see. Ah, yes. Because I like, you know, to tell them what's happening and not to listen to wait for them to say, you know, just tell them what's happening. Why I'm doing this, and, you know, so... Your Highness, Expo 2020, when we drove out here, we saw all the crazy busy building. Is Dubai back? Well, we are very happy that we won the Expo 2020 and 116 countries voted for us. And this is, to me, is a great, all these countries to believe in UAE and Dubai. That's the message I got. But now we have to do something to make it even better for these people who voted for us and to make Expo an excellent Expo. I mean, it was only 5-6 years ago that people were saying Dubai was finished. There was an economic... We did not answer. We did not say anything. But when the crisis, I was, you know, it's a challenge and I know we'll overcome it. So therefore, I was happy with my life going on, and people say, why, how is he? Because I know Dubai is not finished and Dubai is back. Because it is Dubai. No, I think this is a challenge and I don't get scared from challenges, you know. Why did you get into this mess? Why did the crisis come about? There must be things you've learned about it. Of course we learned. We learn every day, you know, from these. But it is not us. We are a part of this world. And this crisis, or call it challenge, is hit the world. But we... Do you not like the word crisis? No, it's challenge. And we are... every day challenge for us. Every day we have to face, you know, challenge for the water, challenge for something to eat, and every day challenge. So we take it as a challenge. When there is no challenge, everybody is a leader. Where is the difficulty or challenge? Some will come through. And that's just test for us to know. I mean, the latest indications are saying, some people are saying that property prices are rising
very sharply again. Rental prices are going up very, very fast. Are you not worried that another bubble is being inflated over Dubai that could burst again? A bubble will fly and not burst because we put a law now. You cannot raise the rent more than percentage. So that will help to stop everybody. I know Expo is coming and people will try to, but we put a law and committee that they don't raise the renting high. Just as a matter of interest, the Arab Spring, did that turn out to be economic good news for Dubai? Because, investors who may have been putting their money into Syria or Egypt or Bahrain or Libya were thinking, I know, I'll put my money into Dubai instead. ये 5 चीजें 20 साल की उम्र से पहले छोड़ दो वरना बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, इस एज में कभी भी नशा मत करना। नंबर 2, लड़कियों के लिए पागल मत बनो। नंबर 3, किसी से पैसे उधार लेके मत जीना। नंबर 4, कभी भी दिखावे के चक्कर में मत पड़ना। नंबर 5, फालतू की रील्स देखने से अच्छा है सीको ऐप डाउनलोड कर लो। दोस्त, सीको ऐप तुम्हें लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। सीको ऐप इंडिया की नंबर 1 एजुकेशनल ऐप है। यहाँ सिर्फ सिखाने वाली वीडियो आते हैं और सीखो पर कोई एड्स नहीं आते। सीखो ऐप पे आप सारे सरकारी कामों को ऑनलाइन करना, इंग्लिश स्पीकिंग, बिजनेस करना, शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग, यूट्यूबर बनना और भी बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हैं। तो अगर तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो अच्छी चीजें आज ही सीखना शुरू कर दो और उसके लिए सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप। I was asked this question when we had the government meeting, 30 country government meeting, and one lady asked me, did you benefit from the Arab Spring? And I was honest with her. At that time, the number was with me, yes, there is $30 billion came. But I told her, but remember, if the Arab Spring didn't happen, there will be 60 billion. Did you see the Arab Spring coming? Yes, and I said this when I visited. I spoke in the Gulf University in Bahrain in 2004, and I said to the leaders of the Arab, change or you will be changed. I said that your people will look away from you or try to do that, and because I don't know the future, but there is indication, so you can, feel that is coming. You cannot lie for your nation 40 years and you think they'll still believe you. With this quick communication now. Well, let me ask you about some of the specifics about some of the countries. We've got Geneva 2 taking place later on this month, and I think that Dubai will be represented, and you will be there. Can President Assad stay in power? Well, somebody asked me about Syria and this, and I said, Assad will take a long time. But, if you kill your people, you cannot stay. I hope there will be a solution peacefully that a new elected government will come. So, because he has killed his people, he will go eventually? Eventually we will go, yes. And do you believe that you ought to be offering any support, whether financial or military, or are you, to the Free Syrian Army? We are supporting the people of Syria who are in Turkey or other. We are helping those. But the Free Army, you don't know, because there is some extremist, and you don't know how many group of people now in Syria. And as you hear that some groups are fighting each other. So you don't want to do what Qatar has done or Saudi Arabia has done? And no, our foreign policy is different, and we try to help and not to fear. It seems to me that the UAE, for all its wealth and its power, it takes very light steps on foreign policy. It doesn't want to show its muscle and its weight in the way that, we've discussed that Qatar does. No, I mean, maybe Qatar have a reason or a vision, but here UAE, we don't, we like,
the Emiratis, and the Emiratis kind. We don't want to interfere with the other people. Their nation should say what they want, and we should always help and not interfere with other countries. Here in the UAE, you have cracked down quite hard on political Islam. A number of people Brotherhood. on the Muslim Brotherhood. Right. Is Egypt now better off with General al-Sisi in charge than it was with Mohamed Morsi? वक्त कमजोर है, तू नहीं, सिर्फ हालात बुरे हैं, तू नहीं, सिचुएशन खराब है, तेरी जिंदगी नहीं। बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है, ये सुना तो तूने कहीं ना कहीं होगा, लेकिन तेरे साथ ऐसा जरूर होगा। पता है क्यों? तूने क्योंकि मेहनत करी है। तू आज जो सोच रहा है, तेरे दिमाग के अंदर जो बातें आ गई है ना, Than it was with Mohamed Morsi. Much better. And I'll tell you why. I was asked by the CNN that won't you worried about the Islamic Brotherhood getting in Egypt and holding the government and everything? I said no. I am not worried about that. They will last only 1 year, and then, the people and the army will sort that out. So therefore, it's better for Egypt this. What did they do when they came with Dr. Mercy? I mean, see what happened and see what happened now. I mean... But isn't that democracy? The people spoke. The people elected Mohamed Morsi. Why the people then got rid of him? They went to the streets and squares and said, come on, the army, sort it out. A lot of people went there and so. And we will see in the next election. Do you think General al-Sisi will stand? He'll be the next president? I hope he stay in the army and leave somebody elected for presidency, because I think he's important for him to be the head of the army. He's a strong man and a very good man for Egypt. So better as head of army than head of state? That's what I think. Very interesting. Can I just ask you about, we heard about the death this weekend of Ariel Sharon, the former Israeli Prime Minister. John Kerry is making very strenuous efforts to bring peace between the Israelis. Well, how do you see the prospects? Well, between Israel and the Palestinians, one day they came very close to sign, but they didn't sign the peace process. If they had that and they signed the peace process, of course there will be a bomb here and rocket there, but everybody, the whole world will be against who doing this. And I promise you, Israel will benefit more than us, because we want to deal with Israel and this after the peace process. What we are asking is a country for the Palestinians. And we are, accepting Israel. But for the Palestinians, we cannot just say nothing, no country, no place to stay. So therefore, if we have signed the peace process, there will be some problem, difficulties, but on time, Israel will benefit more. You said you'd like to be trading with Israel. After the peace process, we'll do everything with Israel, They will trade with them and we welcome them and everything. But sign the peace process. How close do you think they are? Every time I think they are close, they go away. I think, you see, what happens if the peace process coming and there is a rocket go to Israel, which is not accurate, Israel go back and hit back. So action and reaction, always happen that way. But if we just be strong and sign the peace process, I think will be better for everybody. Okay. I just want to ask you about Iran. Progress has been made in these talks about giving access to Iran's nuclear facilities. Do you believe the time is now ripe to lift sanctions against Iran? I think so, and give Iran a space. Really, you see, Iran is our neighbor, and we don't want any problem.
and they didn't, have any problem. But if the peace, and they agree with the American, and the American agree and lift the sanction, everybody will benefit. We suffered from the sanction on Iran. And yet they're your biggest trading partner, I think. Yes, but when we suffered here, we try to open other doors for trading with other countries. Sure. So, to praise them. but just to be clear, Iran has done enough in your mind that the sanctions should be lifted. I think so. If they allow the people to go and look at their nuclear weapon, and they are not making any nuclear, because if they did, nuclear is very dangerous for me also. But if they are not, it should be lifted slowly and firmly. So you believe them when they say that their nuclear ambitions are purely for civilian nuclear power? I heard it from them. I heard it always, and I think sometimes they're saying the truth. I don't think they want. Ahmed Najat, I saw him, and I asked him, "Are you building a nuclear weapon?" And he said, "Okay, Sheikh Mohammed, what will I do? And if I have a means of transporting this weapon to Israel, how many Palestinians I will kill? And the European and the American will finish my cities in Iran. So you think he said, I'm not crazy to go for that. The weapon is of the past. I just want to talk a bit about Dubai and the criticisms that have been made of Dubai about your country's human rights record. I mean, we've just had a case of an American who's just been released from prison who made a spoof video about youth culture. And he was put in prison for several months. Why? We have a law, like when we cracked at the Muslim Brotherhood, because if they want to live and stay and work, they are okay. If they want to go extreme, we have a law for that. I mean, the kid said, I did nothing wrong. We had no idea of what our crime was. We had no idea how long we'd be in prison for. We weren't actually told what our crime was until 5 months later after we were taken in. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रही है, 100-200 व्यूज पे जाके वीडियो स्टक हो जाती है। ऐसे ही हो रहा है आप लोगों के साथ। तो 2026 में आपको कौन सी ट्रिक को लगा के अपनी वीडियो को वायरल करना है, आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको बताने वाला है। मिलियंस व्यूज आ रहे हैं तो हमारी 200 पे स्टक हो जाती है। आखिर हम क्या गलती कर रहे हैं? तो वही गलती दोस्तों आज आपकी ठीक करने आपका भाई आ गया। जैसे कि मैं अब इस मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने वाला हूँ और ये जो मोबाइल है जिसपे शॉर्ट्स वायरल हुई हुई है इसको साइड पे रख देता हूँ और इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। अब जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ गौर से देखिएगा और समझिएगा, 1 मिनट भी अपना जाया मत कीजिएगा स्किप करके, क्योंकि ये वीडियो उन सब वीडियो से बहुत डिफरेंट होने वाली है जो 2025 में आपको दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था। क्योंकि जब YouTube की अपडेट्स आती हैं तो कोई ना कोई चीज चेंज हो जाती है, कहीं से खत्म होके कहीं और शिफ्ट हो जाती है। सबसे पहले YouTube ऐप को ओपन करना है आपने, लेकिन इससे पहले वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आइंदा से इस तरह की जब भी वीडियोस मैं डालूं उनके नोटिफिकेशन सही टाइम पे आप लोगों के पास पहुंचते रहे। जैसे कि आपको पता है कि शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करने के लिए लेफ्ट साइड पे ये जो आपको ट्रेंड वाला बटन नजर आ रहा है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते थे तो यहाँ पे आपको शॉर्ट्स का एक ऑप्शन नजर आता था जो कि YouTube ने हटा दिया है। 2026 आने से पहले ही हटा दिया है और वो कहाँ शिफ्ट कर दिया है बहुत से क्रिएटर्स को अभी तक नहीं पता है और वो बेचारे पुराने तरीके लगा के अपनी वीडियो पे आजमा रहे हैं और एक वीडियो उनकी वायरल नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कहता ये जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ इससे आपकी वीडियो 100% वायरल हो जाएगी। 5 पॉइंट अगर आप लोगों की वीडियो में ऐड है वो मैं आपको शॉर्टकट में जल्दी बताता हूँ। अगर वो ऐड है तो ये ट्रिक लगाने की वजह से आपकी वीडियो भागने लग जाएगी, जैसे कि मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ बताया और इसी तरह से करते करते मैंने अपनी एक वीडियो को वायरल करवा लिया। अब करना कैसे है ये देखिए, मैंने पेज को रिफ्रेश किया है, ठीक है। आपने अपने चैनल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, यूट्यूब को मैंने ओपन किया है और स्क्रॉल डाउन आपने करते रहना है। स्क्रॉल डाउन दोस्तों जैसे
करोगे तो ये बीच बीच में ना शॉर्ट्स भी यूट्यूब आपको दिखा रहा होता है, शॉर्ट्स वीडियो दिखा रहा होता है, लॉन्ग वीडियो के साथ साथ शॉर्ट्स वीडियो भी आपको दिखा रहा होता है। देखिए जैसे कि ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, किसी एक शॉर्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि अब अगले पेज में आएगा, इसको ओपन किया मैंने, वीडियो प्ले होगी। अब यहाँ पे वो फीचर आपको नजर नहीं आने वाला जब तक आप लोग अपने फिंगर से स्क्रीन पे इस तरह से प्रेस नहीं करेंगे। गौर से देखें, मैं आपको जो जो बता रहा हूँ। अब जैसे ही आपको ऊपर वाली लाइन पे ये फीचर्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, सब्सक्रिप्शंस, लाइफ, लेंस, ट्रेंड्स, शॉपिंग, आप लोगों ने इस ट्रेंड्स वाले साइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब आप उस जगह पे आ जाएंगे जिस जगह से आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन वो 5 पॉइंट भी साथ बीच में वीडियो के ऐड होना बहुत जरूरी है और मस्ट है, जिसकी वजह से वो वीडियो आपकी भागने लग जाएगी। और साथ इसका होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जिस म्यूजिक ने व्यूज दिए ना लोगों को, आपने वो वाला म्यूजिक चूज करना है। ये देखो यहाँ पे बिग गाय जो आपको लिखा नजर आ रहा है, इस लाइन पे ऊपर क्लिक करना है और इस म्यूजिक को जितने लोगों ने यूज किया देख लो, 6 मिलियन, यहाँ पे एक वीडियो 1 मिलियन पे जाने लगी है, 2.3 मिलियन। तो इसी तरह से लाखों में देखें और मिलियंस में व्यूज आपको सारे नजर आ रहे हैं, 21 मिलियन, 2.7 मिलियन, 2.5 मिलियन, इस म्यूजिक को यूज करने की वजह से। देखो यहाँ पे बैक आता हूँ, इसी तरह से जो टॉप में हमें पहले नजर आ रहा था उसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऊपर वाली म्यूजिक वाली लाइन पे, तो 143 मिलियन व्यूज इस वीडियो ने लिए इस साउंड को यूज करने की वजह से। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी कंटेंट इसी टाइप का, आपने देख लेना है कि किस टाइप का आपका कंटेंट है और किस तरीके से इसको यूज करना है। आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहना है और अपनी नीश के मुताबिक आपने चूज कर लेना है। और अगर नहीं भी मिल रहा तो आपने फर्स्ट वाली लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ज्वाइन दिस ट्रेंड पे आपने क्लिक करना है। अब एक एक स्टेप को गौर से देखना, क्योंकि हैशटैग्स जो मैं आपको देने वाला हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उनको आपने यूज करना है और सारे हैशटैग आपकी नीश के मुताबिक आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, उसका लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे टॉप पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे वो म्यूजिक सिलेक्ट हो चुके हैं, आपने लेफ्ट साइड पे ऐड पे क्लिक करके गैलरी में से वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें, आपकी वीडियो सामने आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी ड्यूरेशन आपने कम से कम 1 मिनट से कम रखनी है, 55 सेकंड रखनी है। और इसको यहाँ पे मैं 55 सेकंड यानी कि तकरीबन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपने बनानी है स्टोरी जो 59 सेकंड के अंदर हो, 1 मिनट वाली भी चल जाती है। इस तरह से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखना, यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो वो म्यूजिक चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, के तेरी हाथों की लकीरें कहाँ गई? मैडम, बर्तन घिस घिस के सारी लकीरें मिट गई। बर्तन किसके? ये डिश वॉशर मैंने किचन सजाने के लिए रखा है। रुको मैडम, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कढ़ाई के जिद्दी दाग घिस घिस की जाती है। डिश वॉशर में ये डालने से पहले तो धोना तो पड़ेगा ना। अच्छा, तो क्या हम कपड़े धोकर वॉशिंग मशीन में डालते हैं? नहीं, नहीं ना। अब वैसे ही बर्तनों को प्री रिंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास फिनिश टैबलेट्स भी है। फिनिश के 3 पावर चेंबर्स और वॉश का 70 डिग्री हॉट वाटर वॉश जिद्दी दाग और चिकनाई आसानी से निकाल देते हैं। देखा ना, फिनिश और वॉश का कमाल। ये तो कमाल हो गया मैम। क्या आप भी किसी को जानते हो जो डिश वॉशर होते हुए भी उसे यूज ही नहीं करता? अरे तो जल्दी से उन्हें ये वीडियो भेजो and ask them to switch to the right way to dishwash with finish and wash। देखिए यहाँ पे आपकी जो वीडियो का साउंड है ना, जो स्टोरी आपने क्रिएट की थी, उसको आपने ओपन करना है। तो राइट साइड पे जो आपका साउंड है उसको आपको फुल रखना है, बैकग्राउंड म्यूजिक को आपको कम कर देना है, 20%, 15% प्ले करके चेक कर लेना कि आपकी जो वीडियो वो खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक उसके बीच में ऐड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो ऐड हो गया, टिक वाले साइन पे मैंने क्लिक कर दिया। ये देखें, जहाँ एक बूढ़ी औरत बीमार बेड पर लेटी होती है, टेबल पर आवाज क्लियर आपकी सुनाई दे रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता जा रहा है, एडजस्ट हो गया बिल्कुल। मैंने 20% पे किया, आप देख लेना 15 या 20% रेंज में आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने टेक्सटिंग करनी होती है, ये फीचर आपको दे दिया गया है यहाँ पे।
आपने टेक्सटिंग करनी है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, और थंबनेल जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हो उसके अंदर भी ये चीज कर सकते हो। जैसे कि देखें यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, आप लोग फिल्टर का यहाँ पे यूज कर सकते हो, स्टिकर्स लगा सकते हो। जैसे कि मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, आपकी वीडियो पे अगर आपने कलर ऐड किए तो यहाँ पे आपको ये नीचे सारे नजर आ रहे हैं, आप लोग यूज कर सकते हो। पहले वाले पे क्लिक कर सकते हो, ओके पे क्लिक कर सकते हो, वीडियो के अंदर और कलर ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करना, अब मेन पार्ट आ जाता है, यहाँ पे बहुत ही कमाल की चीजें होने वाली है। वीडियो को आपने विजिबिलिटी पे आके पब्लिक नहीं करना है, एकदम अनलिस्टेड रखना है। बैक आके यहाँ पे थंबनेल पे पेंसिल वाले साइन पे क्लिक करना है। प्रोसेसिंग इस तरह से होगी 2 सेकंड के लिए। अब यहाँ पे मुझे थंबनेल सेलेक्ट करना है, कुछ ऐसा सेलेक्ट करना है, कुछ इमोशनल हो, यानी कि कुछ ऐसा हो जो सस्पेंस क्रिएट कर रहा हो और लोग मत, तो कोई ऐसा सीन मुझे यहाँ पे उसका रोने वाला ऐड कर दे या भागने वाला, वो आपने वीडियो के अंदर से सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि देखें ये फ्रूट लेके भाग रहा है और इसके पीछे वो बंदा डंडा लेके भाग रहा है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने यहाँ पे टेक्सटिंग करनी है, ये देखिए ए का जो बटन नजर आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये क्या लिख दिया, बहुत बुरा हुआ, यानी कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा राइट करना है। ये मैं 5 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा ना, एकदम से बोल के बताऊंगा, कोई लंबी चौड़ी मैं आपको नहीं चीजें सुनाने वाला, जस्ट आपको बताने के लिए कि वीडियो में आपकी ये चीजें ऐड होनी चाहिए। इसका फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हो, ये ऊपर वाले बटन पे इस तरह से क्लिक करोगे तो ये आपका फॉन्ट चेंज होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे कलर आपने कैसे चेंज करना है, स्ट्रोक लाइन कैसे देनी है, तो ये आप ग्रीन भी लगा सकते हो, व्हाइट कलर पे आप लोग येलो भी लगा सकते हो। तो इस तरह से चेंजिंग वगैरह कर लेना, साइज छोटा बड़ा यहाँ से होता है। डन पे आपने क्लिक करना है और उसको यहाँ पे आपने टॉप वाली लाइन पे लाके इस तरह से छोड़ देना है। साथ में इमोजी भी ऐड कर सकते हो, यानी कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग कोई इस तरह से रोने वाला सीन ऐड कर सकते हो या हंसने वाला कर सकते हो। इस तरह से देखो मैंने रोने वाला कर दिया है, डन पे क्लिक किया तो इसको मैंने यहाँ पे ऊपर एडजस्ट कर लिया है। ये लोगों को मजबूर करेगा, ये सीन लोगों को मजबूर करेगा, आप देख लेना। और इस टिक वाले साइन पे आपने क्लिक कर देना, ये आपका थंबनेल लग गया है, जिसपे आप राइट भी कर सकते हो, सीन भी सिलेक्ट कर सकते हो और फिल्टर भी यूज कर सकते हो। जब आप अपलोड कर रहे थे उस दौरान मैंने आपको पीछे बताया। अब यहाँ पे आपने लगाना है टाइटल। टाइटल क्या लगाना है, देखें जो इस वीडियो के मुताबिक जो टाइटल होना चाहिए वही मैंने ऐड करना है, ना कि मैंने टाइटल और कोई लगा देना है और यहाँ पे वीडियो कोई और होगी। ऐसे नहीं करना, 2 से 3 वर्ड आपको ऐसे लिखने हैं जो कि यानी कि बहुत इमोशनल होने चाहिए, जैसे कि पुअर पपी स्टोरी, इस तरह से मैं लिख देता हूँ। और आगे मुझे 3 हैशटैग यहाँ पे लगाने हैं, गौर से देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे हैश लगाकर शॉर्ट्स लिखना है, दूसरे नंबर पर आपको हैश लगाकर स्टोरी टाइम लिखना है और तीसरे नंबर पर हैश लगाकर आपको रिलेटेबल ये वर्ड ऐड करना है। और बाकी के कहाँ पे ऐड करने, यहाँ पे आपको जस्ट टाइटल शॉर्ट और 3 हैशटैग का यूज करना है, भर भर के यहाँ पे आपको ऐड भी करने। यहीं पे आपने लोकेशन लगा देनी है, जिस कंट्री को आपने टारगेट करना है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और कंट्री ऐड कर देना है। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिख देता हूँ, यूके ऑडियंस को मैं टारगेट करना चाहता हूँ तो यूनाइटेड किंगडम लिख दिया है। उसके बाद ऑडियंस पे आके मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो सब देखें, छोटे बड़े सब देखें, तो यहाँ पे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपने आना है, सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है अल्टरनेट कंटेंट। आपने क्या करना है, अगर एआई से वीडियो बनाई है तो आपने यस कर देना है, अगर एआई से नहीं बनाई तो आपने नो कर देना है। उसके बाद कमेंट को आपको ऑन रखना है, याद रखना ऑफ नहीं करना, इसी से वीडियो आपकी आगे जानी है। बहुत से लोग ऑफ कर देते हैं, ऑफ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे वीडियो विजिबिलिटी अनलिस्टेड करके आपने अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक कर देना है। अपलोड शॉर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वीडियो यहाँ पे अपलोडिंग देना स्टार्ट कर दी। इसी दौरान आपने क्या करना है, सीधा वाईटी स्टूडियो ऐप को ओपन करना है। स्क्रीन पे आ जाता हूँ, वाईटी स्टूडियो ऐप ओपन कर ली। यहाँ पे आपको कंटेंट पे आना है, शॉर्ट वीडियो को सिलेक्ट करोगे, ये इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आपने पेंसिल वाले साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन का जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी नीश के मुताबिक जो आप जिस कैटेगरी पे आप वीडियो डाल रहे हो उसी से रिलेटेड आपको 7 से 8 हैशटैग लगाने हैं। वो कैसे आपको पता चलेगा आपकी नीश कौन सी है, तो मैं एक फाइल है जैसे कि नोट्स में मैंने ये तैयार की हुई है, आप लोगों के साथ व्हाट्सएप चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। आपको अपनी अपनी कैटेगरी के यहाँ पे हैशटैग नजर, सारा ये पेज मैंने तैयार किया हुआ है। गिन चुनकर मैंने वो हैशटैग निकाले जो कि आपकी वीडियो को चलाने में आपकी मदद करेंगे। शर्त ये कि आपने इसी तरीके को लेके चलना है और समझ के उन 5 पॉइंट्स को भी अपने माइंड में रखकर आपने इन वीडियोस को डालना है। अब जैसे कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो इंटरटेनमेंट भी है, फनी भी है, स्टोरी वीडियोस भी है, तो उसके अंदर ये सारे हैशटैग
ठीक है, इनको मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ, जिसपे फनी है, कॉमेडी है, रिलेटेबल है, स्टोरी टाइम है, इमोशनल है, सैड स्टोरी है, हार्ट टचिंग है, तो इनका बहुत ज्यादा यूज है। जैसे कि इफ योर वीडियो इज फनी, इमोशनल और स्टोरी टेलिंग, तो आपको ये इस्तेमाल करने। इनको मैंने कॉपी कर लिया, डिस्क्रिप्शन पे आके इस जगह पे आपने लाइन से पेस्ट कर देना, कुछ भी नहीं करना, बैक आना है और सीधा लास्ट पे आ जाना है। ये जो आपको मोर ऑप्शन वाला बटन नजर आ रहा है, इस पे आके आपने क्लिक करना है और यहाँ पे 1 2 3 थर्ड ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है ना, कैटेगरी का, ये आपने सही से चूज करनी है, जो आपकी नीश है ना उसी से रिलेटेड। जैसे कि अभी ये फनी वाला है, कॉमेडी वाला है, स्टोरी टेलिंग है, तो इस तरह से मैं इंटरटेनमेंट इस पे सिलेक्ट करूंगा और इसका आइडिया आप जितने भी आपके कंपेटिटर्स हैं ना, बड़े चैनल्स हैं आपसे रिलेटेड, उनकी जाके चेक कर सकते हो। इसी तरह से अपनी हर वीडियो को आपको इस तरह से आके सिलेक्ट करना है। ये बार बार आपने चेंज नहीं करनी, एक ही आपने रखना है। जैसे कि मैंने इंटरटेनमेंट सेलेक्ट की हुई है, देखिए आपने भी इंटरटेनमेंट करनी है। अगर आपका कंटेंट एजुकेशनल है तो आपने एजुकेशन। तो इस तरह से आप लोगों ने आइडिया लेके कि उन्होंने क्या रखी है, तो आप लोगों ने भी वही रखनी है। बैक आ जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, अब जो टाइम पब्लिक करने का ना वीडियो, वो हर टाइम नहीं है, किसी भी टाइम आपने अपनी वीडियो को पब्लिश कर देना है। ऐसे नहीं आपने करना, एक टाइम होता है वीडियो को पब्लिक करने का। उसका आइडिया भी आपको कैसे मिलेगा, जब आप 4 से 5 चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, किसी के बेल आइकन पे क्लिक करोगे, जैसे ही उसने वीडियो अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, पता चलेगा कि दिन को 3 बजे कर रहा है, शाम को 6 बजे कर रहा है, रात को 9 बजे कर रहा है, रात को 12 बजे कर रहा है, किस टाइम ये अपनी वीडियो को पब्लिक करता है। उस चीज का आइडिया आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद होगा। यानी कि अगर आप ये वाली वीडियो डाल रहे हो ना, ये पुअर पपी वाली, या कोई भी वीडियो डाल रहे हो, तो किसी ना किसी को तो देख के ही आपने स्टार्ट किया ना कि यार इसको तो मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, तो मैं भी इसी तरह की वीडियोस डालता हूँ। तो उन चैनल्स को देखो, फॉलो करो यार, वो कौन से टाइटल हैशटैग लगा रहे हैं, वहां से भी थोड़े आइडिया पिक कर लिया करो, उनकी वीडियो को देखा करो, क्या चीज उनकी वीडियो के अंदर है जिससे इतनी एंगेजमेंट आ रही है। अब मैं जल्दी जल्दी से आपको वो 5 पॉइंट बता देता हूँ कि ये वीडियो में जब तक आपकी ऐड नहीं होगी, जितनी मर्जी आप ट्रिक्स लगा लें, आपकी वीडियो वायरल नहीं होने वाली। शॉर्ट्स वीडियो आपकी कम से कम 55 से 59 सेकंड की होनी चाहिए और ये 5 चीजें उसके अंदर ऐड होनी चाहिए। सबसे नंबर 1 पे आपका जो 2 से 3-4 सेकंड का जो हुक है ना, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि लॉन्ग वीडियो में हम कहते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट, आपका जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो शॉर्ट वीडियो में इतना टाइम नहीं होता, 2 से 3 सेकंड ही होते हैं ऑडियंस को वीडियो में रोकने के लिए। नंबर 2 पे क्लियर टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। आपकी वीडियो के अंदर जो टेक्सटिंग है ना, वो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक थीम लेके आपको चलना है, जैसे कि मैंने अपलोडिंग के दौरान लिखकर आपको दिखाया है, ब्लैक कलर में लिखे है, उसके ऊपर येलो स्ट्रोक दे दिया। तो हर वीडियो में आपने इसी तरह से राइटिंग करनी है। तीसरे नंबर पर ट्रेंडिंग साउंड, जो कि बहुत बड़ी गेम है। इसको अगर आप समझ गए और यूज करना आज से स्टार्ट कर दिया, अगर आपको नहीं पता था ये तरीका, आज आपको वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा, बहुत मैटर करता है। अब फोर्थ नंबर पे इमोशनल और शॉकिंग मूवमेंट्स आपकी वीडियो के अंदर होने चाहिए। बिल्कुल सादी सादी वीडियो आपकी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ उनकी वीडियो को प्ले करोगे तो पता चलेगा कि क्या अपनी वीडियो के अंदर कर रहे हैं। जिस नीश पे भी आप काम करें, तो आइडिया लेके ही आपको काम करना है, अपने पास से नहीं करना। उसके बाद जो 5 नंबर पे पॉइंट बताने वाला हूँ ना, ये बहुत कमाल का है और इसे आप लोगों ने जरूर यूज करना है। वो है वॉच टाइम। वॉच टाइम और रिप्लाईज आपको आ रहे हो, उस वीडियो पे एंगेजमेंट आनी चाहिए, वॉच टाइम आना चाहिए। एक वीडियो अगर आपने पब्लिक कर दी, कोशिश करो घर वालों के मोबाइल से, उनके सबके इंटरनेट डिफरेंट होंगे, आप लोग अपनी वीडियो को एक मोबाइल से 10-10 दफा वॉच करें, 5-5 दफा वॉच करें। घर में अगर 3 मोबाइल है तो उनको 4-4 5-5 दफा अपनी इस शॉर्ट वीडियो को जरूर वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि वो वीडियो आगे निकले। अगर वो 50 व्यूज में, तो एकदम से देखना 400-500 पे चली जाएगी। इसी तरह करते करते वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से होता है जब यूट्यूब देख रहा होता है कि रिस्पॉन्स वीडियो को मिल रहा है, तो वो आगे एकदम से पुश करता है, ऑडियंस तक निकल जाती है, मिलियंस में चली जाती है, लाखों व्यूज गेन कर लेती है। शर्त है कि आपका कंटेंट जो है वो बहुत जानदार बनाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इमोशनल और शॉकिंग मोमेंट उसके अंदर ऐड होना चाहिए। अब सो फ्रेंड्स, ये न्यू मेथड आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, कमेंट करके अपने भाई से पूछ लेना। और एक चीज आप कह रहे होंगे कि यार भाई ने आज विनर नहीं निकाला, तो विनर जरूर निकालेंगे। मैंने कहा चलो वीडियो की एंड में निकालेंगे। ये रहे कल की वीडियो के विनर, जिन लोगों ने कल की वीडियो पे कमेंट्स किए थे, आज ये विनर निकले। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह से आपके चैनल को भी प्रमोट किया जाए फ्री में, तो उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो पे या सॉफ्टवेयर आपको भी विनर पिक कर सके। अभी जो विनर निकले, इनके चैनल का लिंक मैं कम्युनिटी टैब में लगा दूंगा, वीडियो देखने के बाद जाके आप भी सपोर्ट कर देना। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
what I got for you. We love treating them like humans. They love being dogs. And dogs need the right nourishment. Home-cooked meals are insufficient for dogs. Pedigree gives them 100% complete and balanced nutrition with the goodness of protein, vitamin E, and calcium. Love them like family, feed them like dogs. Pedigree. मैं सिर्फ 10th पास हूँ, फिर भी अच्छी सैलरी और सारे बेनिफिट्स वाली नौकरी कर रहा हूँ। अगर तुमको भी 10th पास के लिए बनी हुई इस सरकारी नौकरी की ज्यादा जानकारी चाहिए तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। सीखो ऐप पे करियर ग्रोथ नाम की एक कैटेगरी है। 2025 की टॉप 5 जॉब्स कौन सी है? डेली के 3000 रुपए, रेलवे में डायरेक्ट सिलेक्शन वाली जॉब वैकेंसी और ये 10th पास वाली जॉब 38,000 पर मंथ। जॉब की डिटेल से लेकर अप्लाई करने की प्रोसेस तक सीखो ऐप के एक्सपर्ट शॉर्ट वीडियो में आपको सब कुछ समझा देंगे। अगर इन वीडियोस को देखकर आप उसके लिए अप्लाई करोगे तो आपको भी मेरी तरह सरकारी नौकरी भी मिलेगी और अच्छी सैलरी भी। तो आपके लिए बनी हुई सारी सरकारी नौकरी की डिटेल्स जान लो और उसके लिए सीखो ऐप अभी डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जिसने मेरी हदायत की तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, और यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियोस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए मैं आपके सामने चैनल ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए ये वाला चैनल पे सिंपल हदीस सिंपल जैसे मैंने बनाई उसी तरह की वीडियोस अपलोड कर रहा है। और यहाँ पे ये देखिए दूसरा चैनल 3,97,000 इसके सब्सक्राइबर सिमिलर अहादीस को कॉपी कर रहा है। ऑथेंटिक जो सही अहादीस है सिर्फ उनको यहाँ पर ये देखिए सही बुखारी की अहादीस ये सुना रहा है। इसके अलावा ये देखिए एक और चैनल है यहाँ पे देखिए कुरान और हदीस सिमिलर जिस तरह की मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसी तरह की वीडियोस बना रहा है। सिर्फ एक चैनल की आपको अर्निंग दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इस्लामिक स्टूडियो वालों की यहाँ पर इसकी अर्निंग देख लीजिए कम से कम $375 और मैक्सिमम यहाँ पर $6,000। अगर मिनिमम भी ले लीजिए तो $375 और मैक्सिमम यहाँ पर $6,000। अगर मिनिमम भी ले लीजिए तो तकरीबन 1 लाख सवा लाख रुपया आसानी से कमा रहा है सिंपल और सिंपल अहादीस की वीडियोस बनाकर। यहाँ पे देखिए
1.49 मिलियन इसके व्यूज है। मतलब कि अगर आप अहादीस की वीडियोस बनाते हैं, ये जो आपके सामने नजर आ रही हैं, ये जिस तरह मैंने स्टार्ट में दिखाई है, बहुत बड़ी ऑडियंस इसकी अवेलेबल है। देखिए, एक तो आपको स्वाब मिलेगा कि आप ऑथेंटिक नॉलेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अहादीस पहुंचा रहे हैं, और दूसरे नंबर पे अल्टीमेटली आपको बहुत बड़ी ऑडियंस भी मिलने जा रही है, जिससे कि आपके चैनल मोनेटाइज भी होंगे और पैसा भी बनाएंगे। इस तरह की वीडियोस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, फिर बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सिर्फ एक शर्त है, एक शर्त ये है कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास टच मोबाइल है, बाकी सारा काम मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कहाँ से आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा सही अहादीस का। सिंपल आपने कॉपी करना है, दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाना है, कैसे आपने वीडियो क्रिएट करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने जा रहा हूँ। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप भी इनेबल हो, आप भी डॉलर्स में अर्निंग करें, एटलीस्ट यूट्यूब से ही अर्निंग कर ले। वीडियो को शुरू करने से पहले बताता चलो कि मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं 90s मेंटोर यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर आपको रेगुलर ऑनलाइन अर्निंग एंड डिजिटल स्किल्स के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। सो मेक श्योर कर ले कि आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और ये वीडियो जरूर 100% आपके लिए वैल्यूएबल है, अच्छी लगेगी आपको, रियल इन्फॉर्मेशन देगी। सो इसको थम्स अप टाइस करके लाइक आपने जरूर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल में आ चुका हूँ। सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लेना। ये जो आपके सामने नजर आ रही है, इसका नाम है इस्लाम 360। इस्लाम 360 ये वाली एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड और iOS दोनों में अवेलेबल है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है, इसमें सारी चीजें आपको मिलने जा रही है। कुरान के ऊपर क्लिक करेंगे, कुरान के रिलेटेड यहाँ पे अल कुरान, पूरा पूरा कुरान यहाँ पर मौजूद है, प्रॉपर इसकी ट्रांसलेशन के साथ। सीरतुल नबी भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर 15 लाइन कुरान, यहाँ पे देखिए फहमुल कुरान, रिसाइटेशन, सारी चीजें अवेलेबल हैं। और अगर मैं हदीस के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए सही मुस्लिम की हदीस, सही बुखारी की, सुनन अबू दाऊद, जामिया तिर्मिज़ी, यहाँ पे देखिए सुनन इब्न माजा, सुनन निसाई, यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी अहादीस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप किसी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिलने जा रही हैं। उसके अलावा अगर आप वर्शिप के ऊपर क्लिक करेंगे, रोजे के रिलेटेड, हज, उम्रा और नमाज जनाजा के रिलेटेड एक एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। हमने क्या करना है, हमने हदीस के ऊपर, हदीस नीचे नजर आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, अहादीस सारी की सारी। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे, सही मुस्लिम के ऊपर क्लिक करेंगे, सही मुस्लिम की सारी अहादीस उर्दू जुबान में यहाँ पर अवेलेबल है। उर्दू जुबान में अनलिमिटेड डाटा आपको सही अहादीस का यहाँ पर मिलने जा रहा है। अगर आप यहाँ पर बैक पे जाते, सही बुखारी पे क्लिक करें, सही बुखारी के रिलेटेड यहाँ पे देखिए सारी की सारी 876 अहादीस यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए उर्दू, इंग्लिश, हिंदी सारे में अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए जो सी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए सुनन अबू दाऊद, जामिया तिर्मिज़ी, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो वाली सारी की सारी हदीस मिल जाएगी। मैं सुनन इब्न माजा के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हदीस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितनी ज्यादा हदीस है। सुन्नत की अहमियत और फजीलत, तहारत और इसके अहकामात, उसके अलावा तयम्मुम के अहकामात, सलात के अहकामात, यहाँ पर देखिए सारी की सारी चीजें यहाँ पर उसके रिलेटेड, किस नंबर से हदीस स्टार्ट होती है, किस नंबर पे एंड होती है, वो भी बताया गया है। अगर किसी हदीस को यहाँ पर क्लिक करके ओपन भी करेंगे तो उसके रिलेटेड आगे नेक्स्ट भी बताया गया कि डिटेल के साथ। यहाँ पे देखिए आल हदीस, यहाँ पे देखिए सुन्नत के रिलेटेड यहाँ पर 266 है, 185 है, ज़ईफ हदीसें भी यहाँ पर बताई गई 81 है। सारी की सारी चीजें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अलग-अलग करके बताई गई हैं। उनको सुन भी सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन भी ले सकते हैं, उसकी अरेबिक भी ले सकते हैं। एक एक चीज यानी कि अनलिमिटेड डाटा है आपके पास आपकी वीडियोस बनाने के लिए, जो कि आप यहाँ से लेंगे। आप यहाँ पर ये देखिए, एक सोर्स आपके पास ये हो गया। अगर आपको लगता है कि इस पे कोई मसला मसाइल है तो आप इन हदीस को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं किसी ऑथेंटिक बुक के साथ। ठीक हो गया, ये वहीं से ली गई है, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी तसल्ली करना चाहे तो क्रॉस वेरिफिकेशन आप जरूर कर सकते हैं, ये आपका राइट है। तो हमारा पहला मसला हल हो गया, हमारे पास अनलिमिटेड इस्लामिक डाटा अवेलेबल है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमें अपनी वीडियोस क्रिएट करने के लिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे आ जाइए। यहाँ पर ये देखिए, हम गूगल में आके सबसे पहले आपने टाइप करना है इस्लामिक बैकग्राउंड। हमें अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे एंटर मारा, यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा बैकग्राउंड अवेलेबल है। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर ऊपर इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इमेजेस के ऊपर क्लिक किया। यार मीट मैन इश्यू पेंसी तो मेरे जैसी है, मगर ऑर्गेनिक मेरे ऑर्गेनिक इंडिया जैसे नहीं है। ऑर्गेनिक इंडिया जरूरत से ज्यादा टेस्ट करता है, फार्मर से सोर्स करता है, ग्लोबली सर्टिफाइड है। क्या तुम्हारा वाला है? Got it, sir. Organic India is good. ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, गुड। जरूरी नहीं जो नाम से ऑर्गेनिक है वो काम से भी ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक इंडिया सिर्फ नाम से।
Introducing Motorola Signature. Don't blend in, stand out. Hello, Moto. जैसे मैंने इमेजेस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा बैकग्राउंड यहाँ पर अवेलेबल है। आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात नोट कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप सामने नेक्स्ट विंडो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखिए मैंने ओपन कर लिए। देखिए बैकग्राउंड मेरे ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखिए मैंने ओपन कर लिए। देखिए बैकग्राउंड मेरा आ चुका है। सबसे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, हमने इसकी रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। रेशियो कौन सी सेलेक्ट कर ली? 16:19 करनी है, जो कि यूट्यूब की रेशियो होती है, यूट्यूब की वीडियो की रेशियो होती है। 16:19 मैंने यहाँ पर क्लिक करके इसकी रेशियो सेलेक्ट कर ली है। अब देखें, इसको सबसे पहले मैंने स्लाइड करके थोड़ा सा बैकग्राउंड को इसका ड्यूरेशन लंबा कर लेना है। सिंपल, आपने एरो के ऊपर क्लिक करके जैसे आप ड्रैग करेंगे ये दूर तक चला जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम दोबारा वापस आ जाते हैं उन्हीं अहादीस के ऊपर जो इस्लाम 360 में अवेलेबल है। यहाँ पर छोटी छोटी अहादीस आपने लेनी है। सबसे पहली हदीस जो ऊपर नजर आ रही है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये देखिए ये ओपन हो जाएगी आपके सामने अरबिक के साथ। यहाँ पर देखिए ऊपर अरबिक नजर आ रही है, नीचे इसकी ट्रांसलेशन नजर आ रही है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसलेशन वाला टेक्स्ट चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप नहीं लेंगे, आपने सिंपल ये जो नीचे दो लाइनें नजर आ रही है ना शेयर वाली, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी ये वाली। यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसकी अरबिक कॉपी करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन कॉपी करना चाहते हैं या दोनों कॉपी करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मुझे अरबिक नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन कॉपी करूंगा। ये देखिए ट्रांसलेशन के ऊपर क्लिक करके शेयर के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए ट्रांसलेशन, बहुत नहीं, ट्रांसलेशन एंड शेयर के बटन के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे सामने ये ऑप्शंस पूछेगा कहाँ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने कॉपी टू क्लिप बोर्ड इसके ऊपर क्लिक कर देना, ये वाला जो नजर आ रहा है ना। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, मेरे पास ये टेक्स्ट मेरे पास आ चुका है, टेक्स्ट सिर्फ। अब मैंने क्या करना है, वापस आ जाना है वीएन के अंदर। यहाँ पर ये देखिए सिंपली अब मैंने यहाँ पर ये जो टी नजर आ रहा है ना, टी प्लस का बटन, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखिए प्लस के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर अगेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहला आपने जो काम करना है, ये जो डबल एफ नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और ऐड फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब ऐड फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपने यहाँ पर इंपोर्ट अ फाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देखिए जो फॉन्ट हमने जमील नूरी वाला फॉन्ट यहाँ पर डाउनलोड किया था, यहाँ पे देखिए नीचे नजर आ रहा है ना, अब आपने इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पर ये देखिए आपके पास जिप फाइल पड़ी हुई है। सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये वाला फॉन्ट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ऑलरेडी अपलोडेड है। आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपका यहाँ पर फॉन्ट अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे आ गया ना जमील नूरी फॉन्ट। सिंपल मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करूंगा। इस तरीके से मेरी उर्दू बहुत ही प्यारे तरीके से नजर आएगी। अब देखें फॉन्ट सेलेक्ट हो गया। अब ये जो मैं डायलॉग बॉक्स ऊपर नजर आ रहा है उसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा। दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट मैंने वहां से कॉपी किया था हदीस वाला, इसके ऊपर टैब करके इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर अब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, यानी कि कहाँ से मैंने ये वाली हदीस ली है, नीचे वो नजर आ रहा है इस्लाम 360, इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से बैक स्लैश करके। यहाँ पे देखिए इसको डिलीट कर लीजिएगा और जो जो चीजें आपको चाहिए सिर्फ वही रखनी है। सुन्नत की अहमियत और फजीलत, इसको भी डिलीट कर दो। नीचे देखिए इसको एक्स्ट्रा टेक्स्ट को आप डिलीट कर लीजिए, हदीस वाला। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो नजर आ जाएगी। आप देखिए ये वाला टेक्स्ट ना बाहर निकला हुआ है, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसकी एडजस्टमेंट करनी है स्लाइड के अंदर। उसके लिए क्या करना होगा, आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा, ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा मैं इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ, वाह काफी स्वीट है, शायद इसीलिए उसे डायबिटीज से आंखों की रोशनी चले आ रहा होगा ना, यहाँ पे देखिए है। उसके बाद आपने डबल लाइन के ऊपर ट्रिपल लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी लेटर स्पेसिस अच्छी सी कर लेनी है। ठीक होगा जी। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी इसमें प्रॉपर के ऊपर क्लिक करना पे जाए, लोग होता है ना वो नजर आ रहा होगा, आपने सिर्फ टैप कर लीजिए, ये फ्री में इसको डिलीट कर लीजिए। अब देखिए मैंने इसका वॉइस ओवर करना है, म्यूजिक के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड का बटन नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक किया। अब देखिए जैसे मैंने दूसरा वॉइस ओवर करना नजर पर अमल करो। अब देखिए एक साइड मेरी स्प्लिट हो गई, ये वाली साइड वाली, ये जो नजर आ रही है दूसरी स्लाइड है, ये पीछे वाली स्लाइड है साइड वाली, ये जो नजर आ रही है दूसरी स्लाइड है, ये पीछे वाली स्लाइड है। इसके ऊपर आपको तीसरा सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके ये देखिए स्लाइड वाली एनिमेशन लगाना चाहिए, इसकी स्पीड वगैरह स्लो करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छी लगती है, दिखने में अच्छी लगती है। देखिए एक रेडी हो चुकी है। अब देखिए दूसरी हदीस को कैसे मैंने यहाँ पर पेश करना है। अब देखिए
मैंने ऑलरेडी इसी को कट किया है, स्प्लिट किया, सो सेम फॉर्मेट है, सेम सारी चीजें, सिर्फ मैंने जाना है दोबारा वापस अपनी ऐप में जिसका नाम है इस्लाम 360। यहाँ पे देखिए उसमें गया, उसमें जाने के बाद इसको मैं स्लाइड करूंगा राइट साइड की तरफ, ये बड़ी हदीस है, इसको छोड़ते हैं, इसके ऊपर ये देखिए दूसरी हदीस है। शेयर के बटन पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं शेयर के बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए शेयर के बटन पे क्लिक किया, अगेन मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन इसकी लेनी है, ट्रांसलेशन लेने के बाद यहाँ पे देखिए इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ पे देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद वापस चला जाऊंगा अपनी ऐप के अंदर जो कि है VN ऐप, जहाँ पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दूसरे टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए पहला टेक्स्ट, दूसरे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, इसको सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, टैप करके सिलेक्ट ऑल करके आपने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे देखिए दोबारा टैप कीजिएगा और दूसरी हदीस जो आपने कॉपी की है यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। देखिए टैप किया, ये देखिए टैप किया और यहाँ पे देखिए दूसरी हदीस को कॉपी कर लिया। सिंपली मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, एक्स्ट्रा टेक्स्ट को सिर्फ यहाँ पर रेफरेंस रहने देता हूँ और इसको मैं चेक मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे गुड के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए मेरी दूसरी आ चुकी है। इसकी एडजस्टमेंट कर लीजिए, जैसे आप इसकी एडजस्टमेंट कर लीजिए, इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए। अगेन लेंथ बड़ी इसलिए करनी होती है ताकि जब वॉइस ओवर कर रहे हो तो सारी चीजें पूरी हो। इसके अलावा अगेन म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है, रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, दूसरी हदीस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं आपके सामने। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह से देख लीजिएगा।
अच्छा ठीक है चल
Mm-hmm.